Welcome students to this grammar session from your ACE Grammar book of Standard 4th. How are you all? Hope all of you are fine and staying at home. I think all my dear and loving students are safe, so please stay at home and be safe and healthy. Now you are having enough time, so spend most of your time on your studies. Try to improve your handwriting and read the book regularly. Today, I, Shama Khan, is going to teach you chapter number 19, that is preposition. Which chapter? Chapter number 19, preposition, that we are going to study today from your ACE Grammar book of Standard 4th. Before we start this chapter, chapter number 9, preposition, let's revise our last lesson. Students, tell me which hour was last chapter? Excellent. All my students are very smart. It was chapter number 19, adverbs. So today we are going to revise this chapter, chapter number 18, adverbs. Adverbs tell us more about verbs. Verbs means action word, so it tells more about verbs. They describe how do something happen or how समथिंग इज़ डन. मतलब क्या कि वो बताता है कि समथिंग कैसे होता है, इन विच मैनर इट इज़ डन, और हाउ समथिंग हैपन्स, किस तरीके से होता है. दे ऑल्सो टेल अस हाउ, वेयर, व्हेन एन एक्शन टेक प्लेस, कि एक्शन कब, कहाँ और कैसे हुआ है. आपको पता ही है कि देयर आर 4 types of adverbs which we studied in our last chapter. The first was adverb of manner, in which we can ask the question with how, कि किस तरह से the action has been done. Second was adverb of place, means where the action was done. If we want to ask the question, then it will come by where. Third one was adverb of time. It shows when the action took place. And the fourth one which we studied was adverb of frequency. It tells the number of times the action has been repeated, कि एक्शन कितनी बार हुआ है. तो हमने कौन कौन से सीखे थे एडवर्ब्स? एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी. और वो कब और कैसे यूज़ होता है, दैट यू हैव नोन वेरी क्लियरली. सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट चैप्टर नंबर 19, दैट इज़ प्रेपोजिशन. तो आपको नाम सुनते ही कुछ याद आता है? ये देखो, प्री अलग रखो और हियर सी पोजीशन. तो पोजीशन से क्या पता चलता है कि हम कहाँ पे है. तो उसका मीनिंग भी उसी तरह है. प्रेपोजिशन मीन्स इट शोज द प्रॉपर प्लेस ऑफ द थिंग, कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है. इट शोज द रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स, कि सपोज आई एम देयर, तो वेयर आई एम, तो इट शोज़ द रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स, और उसका प्रॉपर प्लेस दिखाता है. तो उसके नाम के हिसाब से ही उसका नाम है. इट शोज़ द प्रॉपर प्लेस ऑफ द थिंग, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड प्रेपोजिशन. थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए लेट्स रीड दिस एग्जाम्पल. तो हियर द फर्स्ट सेंटेंस इज़ द बॉय इज़ सिटिंग ऑन द बेड. तो हियर the boy and the bed. Here two nouns are there.
उसका रिलेशन दिखाया गया है बाय ऑन, कि वो लड़का कहाँ पे बैठा है, ऑन द बेड। तो टू nouns are there, the boy, the bed. So it is showing the relation between the boy and the bed, कि on which place the boy is sitting. So it is on the bed. The book is in the bag. तो यहाँ पे भी टू nouns है, the book, the bag, और बुक कहाँ पे रखी है, उसके अंदर, सो इन। द बुक इज इन द बैग, इट इज शोइंग इट्स प्रॉपर प्लेस, कि एक्चुअली में बुक कहाँ पे है, सो द बुक इज इन द बैग, showing the position of the book. The cat is sleeping under the tree. तो here also two nouns, the cat, the tree. तो उसका रिलेशन दिखा रहा है कि कैट कहाँ पे सो रही है, अंडर, उसके नीचे। सो द कैट इज स्लीपिंग अंडर द ट्री। नेक्स्ट वन, ही वेंट टू कोचिन लास्ट वीक। तो हियर इट इज शोइंग द डायरेक्शन इन विच द पर्सन हैज़ गॉन। तो यहाँ पे ही एंड कोचिन, तो ये व्यक्ति कहाँ गया, डायरेक्शन इट इज शोइंग ही वेंट टू कोचिन। प्रॉपर प्लेस, के लास्ट वीक दिस पर्सन हैज़ गॉन टू कोचिन बाय दिस preposition word to. She is standing behind the door. तो here she girl और door उसके दो nouns के बीच में रिलेशन है कि लड़की कहाँ है, behind उसके पीछे। So she is standing behind the door. तो here these words on, in, under, to, behind, they show the relationship between the things and their proper place. So these words are preposition. See here, it is showing कि this boy is sitting on the bed. ये bed है, उसके ऊपर ये बैठा है. So it is showing the position of the boy where he is sitting. तो preposition का मतलब क्या हुआ? The words in bold are preposition. तो words में कौन कौन से word थे? Repeat students. Excellent, on, in, under, to, behind. All these words were preposition. तो हम क्या कहेंगे? preposition किसे कहा जाता है? So this is the definition of preposition. A preposition is a word that is used to show the relationship between two things. एक बार और अच्छे से समझ लेते हैं. A preposition is a word that is used to show the relationship between two things in a sentence. कि सेंटेंस के अंदर जो दो चीज़ है या नाउन्स है उसके रिलेशन को दिखाता है, they are called preposition. Understood students? Again, a preposition is a word that is used to show the relationship between two things in a sentence is called a preposition. अब आप पूछोगे कि preposition are for how many kinds? तो preposition are of three kinds which we are going to study today. First, preposition of time, preposition of place, and preposition of direction. Let's understand them one by one. We will start with preposition of time. Now the first is preposition of time. So what is preposition of time? Preposition of times tell us about the time when an action took place. तो क्या दिखाता है preposition of time?
preposition of times tell us about the time when the action took place, कि जब एक्शन कार्य कब हुआ था, that it is describing, इसलिए उसे कहा जाता है preposition of time. Preposition tell us when an action took place, कि एक्शन कब हुआ था, that it is showing, so it is called preposition of time, कि when the action has been done. Let's understand with the help of example. We are having a book sale in March. So here what is there? We are having a book sale in March. So time it is showing कि book sale when it is in the month of March. दो चीज़ का रिलेशन कि बुक सेल कब है, in the month of March with the preposition word in, कि that we are having a book sale in the month of March. So these two words, book sale and March, it is the relation which is showing with the word in, कि मार्च के महीने में बुक सेल इज देयर. सी हैज़ डिनर एट नाइट. तो दिस तो ऑल वी आर हैविंग, हमारा डिनर कब होता है, नेचुरली एट नाइट. सो इट इज़ शोइंग द टाइम कि सी हैज़ डिनर एट नाइट बाय द वर्ड एट. टाइम इट इज़ शोइंग कि रात के टाइम सी इज़ टेकिंग द डिनर. ऑल ऑफ अस आर डूइंग द सेम. सो dinner and night, it is shown the relation with the preposition word at, के रात के टाइम the dinner is being taken. Hiral is returning on Monday. तो हिरल might have gone somewhere. सपोज करते हॉस्टल में गई होगी, तो कब आ रही है वापिस, मंडे, by the word on. हिरल is returning on Monday. तो specific time it is showing Monday Hiral is coming back by the preposition word on. रीना waited for an hour for रवि. तो यहाँ पे दिखा रहा है कि रवि के लिए रीना ने कितना वेट किया, for an hour, 1 घंटे, 1 hour. So रीना waited for an hour for रवि. We have been living in Delhi since 1992. तो here time is mentioned कि कितने सालों से रह रहे हैं, so many years. Now 2020 is there, तो round about 8 years. So they have been living in Delhi since 1992. कि दिल्ली के अंदर वो कब से रह रहे हैं, since 1992. This is showing the position के in Delhi since 1992. Next one, we have classes from 8 a.m. to 5 p.m. तो it is showing कि कितने बजे से कितने बजे क्लासेस है, 8 a.m. to 5 p.m. हमारी क्लास कितने बजे से है, 8 a.m. to 5 p.m. Mostly in North India the timing is like that, okay, from 8 a.m. to 5 p.m. full day school is there, so they are having the classes from 8 a.m. to 5 p.m. She sleeps till noon on weekends. Weekends means Saturday, Sunday. तो Saturday, Sunday तक कब तक सोती है, till 12 बजे तक. तो she sleeps till noon on weekends. So all these words in, at, on, for, since, to, on, these show the specific time, the relationship कि ये time से the action has taken place. So these are preposition of time. Let's see some example. Here it is there, she has dinner at night.
तो उसका डिनर कितने बजे होता है? रात के 8 बजे. Specific time is mentioned, so she is taking her dinner at 8 o'clock at night. So specific time, her dinner is there. Let's see some more examples. See, this school is there. Now, the school is closed on Sundays. So what it is showing? Okay, this school. So mostly all the schools are closed on Sunday. So it is showing the time when the school is closed. The school is closed on Sundays. Then next one. Grandma told me fairy tales during night. तो grandma कब कहानी सुनाती है? During night, के रात के टाइम पे, दरमियान. During means दरमियान. So grandma told me fairy tales, परियों की कहानी, during the night. So specific time is there at the time of going to bed. Now here this girl is there, Shiba. What is the time of taking breakfast? At 9 a.m. सुबह के 9 बजे. तो Shiba had breakfast at 9 a.m. She is taking her breakfast in the morning 9 a.m. And it is a very good habit of taking the breakfast. Everyone take healthy and fresh food during the breakfast. It will be very helpful and it will give you immunity. So please everyone take the breakfast on time. Don't skip it. Now our second is preposition of place. Now in that, what is the meaning of preposition of place? Preposition of place tells us where things are. क्या दिखाता है कि चीज़ें कहाँ पर है. Let's understand with the example. The people are inside the bus. So here two nouns are there. The people, the bus. कहाँ पे है? Inside. तो people are inside the bus. The teacher was behind the table. So when the teacher is teaching the class, mostly where she is standing? Behind. So it is showing the relation between the teacher and the table, her position of standing. So it is behind. The teacher was behind the table. Ragini is standing between Parul and Amit. तो what is position of Ragini? कहाँ पे खड़ी है? दो लोगों के बीच में, Parul and Amit. It is her position. So it is showing the place where Ragini is. So where is Ragini? Ragini is standing between Parul and Amit. The people were standing in front of the counter. तो लोग कहाँ पे खड़े हैं? In front of, काउंटर के आगे. The people were standing in front of the counter. The shoes are in the box. तो here also relation is shown के the shoes कहाँ पे है? In the box. The shoes are in the box. The shoes are in the box. The cup is on the mat. So what relation it is showing? Where is the cup? The cup is on the mat. It is showing the position of the cup. It is on the mat. The bus is at the bus stop. So where is the bus? Bus stop पे. So it is showing its place. कि where is the bus? So these all words, inside, behind, between, in front of, in, on, at. It shows the proper place where the action took place. So they are preposition of place. Pictures के साथ अच्छे से समझ लेते हैं. See, here it is there. This is
द टीचर, तो वेर इज़ द टीचर? वेर इज़ द टीचर? बिहाइंड द टेबल। यहाँ पे हियर टेबल, उसका पोजिशन कहाँ पे है? बिहाइंड द टेबल। सो द टीचर वॉज बिहाइंड द टेबल। नाउ हियर ऑल दिस पीपल कहाँ पे खड़े हैं? इन फ्रंट ऑफ द काउंटर, एग्जैक्ट प्लेस। काउंटर यानी जहाँ पे हम टिकट्स बुक करवाने जाते हैं, दिस प्लेस। तो कौन कौन सी जगह पे होती है? रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एम्यूज़मेंट पार्क में हम जाते हैं तो वहाँ टिकट लेनी होती है। सो दिस पीपल दे आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द काउंटर। लेट्स सी सम मोर एग्जाम्पल। सी हियर दिस बोट, क्या हो रही है? इट इज़ अबाउट टू सिंक। सो द बोट सैंक इनटू द रिवर। अभी वो अंदर डूबने वाली है, सो अब डूब जाएगी। सो द बोट सैंक इनटू द रिवर, अंदर डूब गई। सो इट इज शोइंग द पोजिशन ऑफ द बोट वेयर द एक्शन टू प्लेस। नाउ हियर द टीचर, what did she write on the board? The teacher wrote the question on the blackboard. ब्लैकबोर्ड के ऊपर उन्होंने क्वेश्चन लिखा। तो इट इज शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर, what she wrote on the blackboard, he wrote question. तो question is written by the teacher on the blackboard. Now here it is showing the relation of the horse. The horse, where did he jump? Over the hurdle. The horse, it jumped over the hurdle. So it is showing the position where the horse jumped. So these all are adverb of place. के action कहाँ पे हुआ, that it is showing. So it is called adverb of place. अब हम अपने लास्ट पॉइंट पे आ गए हैं जिसमें हम सीखेंगे डायरेक्शन। तो व्हाट इज़ दैट? प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन यानी कोई दिशा। तो व्हाट आर प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन? प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। कि कोई चीज़ कहाँ पे मूव कर रही है, उसका डायरेक्शन दिखाता है, उसे कहते हैं preposition of direction. So what is preposition of direction? It tells us about the direction in which an object is moving. कि कौन से डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रही है वो दिखाता है। इट इज़ कॉल्ड preposition of direction. एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझते हैं। We went up the hill. तो हम कहाँ चढ़ रहे हैं? हिल के ऊपर, up. So it is showing the direction of our moving up. We went up the hill. के हिल के ऊपर चढ़े। The ball rolled down the slope. तो बॉल कैसे लुढ़कता हुआ आया? Down. The ball rolled down the slope. के स्लॉप थी तो उस पे बॉल नीचे धड़कता हुआ आ गया। So it is showing the relation, the direction in which the ball has fallen down. The ball rolled down the slope. The ship sailed across the ocean. तो ship कहाँ पे गए? इस पार से उस पार। The ship sailed across the ocean. So here it is showing the direction of ship towards the ocean. The boys jumped into the pool. तो here boys ने कहाँ jump किया? Into, direction is their pool. The boys jumped into the pool. We drove to a car to Manali. तो हम किस तरफ बढ़ रहे हैं? Which direction? Towards Manali. It is showing the direction of our moving. तो we drove a car to Manali. She walked along the river. तो वो किस तरफ बढ़ी? रिवर के साइड साइड में चल रही है, उसका डायरेक्शन दिखाया है। She walked along the river.
नेक्स्ट वन ही, हीज नहीं आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मिस्टेक है. करेक्ट इन योर टेक्स्ट बुक. हियर इट इज़ प्रोनाउन ही. वहाँ पे आपको ही करना है. ही लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट. कि दैट पर्सन इज लिविंग अक्रॉस द स्ट्रीट. ही, एवरीवन करेक्ट दिस मिस्टेक. ही लिव्स अक्रॉस द स्ट्रीट. कि वो गली के उस पार रहता है. सो इट इज शोइंग द डायरेक्शन. सो ऑल these words up, down, across, into, to, along, across are the words which is showing the direction in which the object is or the thing is moving. So they are preposition of direction. I think all of you have understood this chapter. तो इसमें आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि a preposition is used to show the relation between two things in a sentence. उसका प्रॉपर प्लेस दिखाता है. preposition वर्ड से ही हमें समझ में आ जाता है कि it is showing the proper place of the two things. So all the students on regular basis keep watch the recorded videos done by the teacher and try to understand the chapter well in detail and watch the full video. Don't see the half of part. It will be beneficial to you. So all students, happy studying. Thank you for watching the video.